औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमने गुज़िश्ता लेसन में 9th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड उसके 2 पैराग्राफ रीडिंग किए थे। आज इसी यूनिट का पैराग्राफ नंबर 3 हम देखेंगे। तो आप लोग ज़रा अपनी किताबों पर तवज्जो रखिए। पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगा, फिर उसके बाद उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग होगी और फिर ट्रांसलेशन होगा। जी, लेट्स स्टार्ट। In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. In the 5th and 6th centuries, mankind stood on the verge of chaos. It seems that the civilization, which had taken 4,000 years to grow, had started crumbling. At this point of time, Allah Almighty raised a Rasul from among themselves, who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith. जी, इसके वर्ड्स मीनिंग नोट कीजिए। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि वर्ड्स मीनिंग में हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है उसमें वर्ड्स के अंग्रेजी में मीनिंग्स पूछे जाते हैं, ऑप्शन दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। तो हम साथ साथ जो है इंग्लिश में भी मीनिंग्स जो हैं आपको बताएंगे। मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, इंसानियत, वर्ज, एज, किनारा, वर्ज, एज या किनारा, chaos, confusion, इज़्तिराब या बेचैनी, civilization, कल्चर, तहजीब, ग्रो, फ्लोरिश, बढ़ना, तरक्की करना, नशो-नुमा पा। क्रुम्बल मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, बुक में लफ्ज़ क्रुम्बलिंग आया है। क्रुम्बल का मतलब होता है ब्रेक into pieces, रेजा होना, ignorance, illiteracy, ignorance, illiteracy, जहालत और faith
बिलीव, अकीदा या ईमान। ये वर्ड्स मीनिंग आपने नोट कर लें। जी अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं उर्दू में। इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos। 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत इज़्तिराब, बेचैनी या तबाही के थाने या किनारे पर खड़ी थी। 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत तबाही या इज़्तिराब या बेचैनी के किनारे या थाने पर खड़ी थी। It seems that the civilization which had taken 4,000 years to grow had started crumbling। It seems ऐसा दिखाई देता था that the civilization, वो तहजीब which had taken 4,000 years to grow, जिसे फलने फूलने में, नशोनुमा पाने में, तरक्की करने में 4,000 बरस लगे थे, वो रेजा रेजा होना शुरू हो गई है। ऐसा दिखाई देता था कि वो तहजीब जिसे फलने फूलने में 4,000 बरस लगे थे, वो रेजा रेजा या पाश पाश होना शुरू हो गई। At this point of time, वक्त के इस लम्हे पर अल्लाह Almighty raised a Rasul among themselves। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर को, रसूल को मबऊस किया। Who was to lift humanity from ignorance into the light of faith, जिसे इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना। फिर देख लीजिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। Allah Almighty raised a Rasul from among themselves who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith। अल्लाह बुजुर्गों बर्तर ने उन्हीं में से, यानी मुशरिकीन मक्का में से ही, अरब के रहने वालों में से ही, उन्हीं में से ही एक पैगंबर यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया, जिन्हें इंसानियत को जहालत से निकाल कर ईमान की रोशनी की तरफ लाना था। तो ये हमारा अजीज़ तलबा यूनिट नंबर 1 का 3rd पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। हमने इसमें इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में ट्रांसलेशन की है, और साथ ही साथ जो हमने वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके उर्दू और इंग्लिश में मीनिंग भी लिखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम मज़ीद इसके जो बाकी पार्ट है वो इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।